Hello, dear student. Welcome to GAYAS classes for mathematics. Today we will study for some important set questions. आज हम लोग सेट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। जैसे आप देखोगे सेट के अंदर इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका है कि W if W equal to 1/8 then find W to the power 2/3। तो वेरी इजी क्वेश्चन है। सबसे पहला काम है W to the power क्या है 2/3। तो W की वैल्यू आपकी दी गई है 1/8 टू दी पावर आपका जाएगा 2/3। 1/8 कैन बी रिटेन एज 1/2 टू दी पावर 3 and whole to the power this is 2/3, right? Now this 3 and 3 cancel out, you will get 1/2 whole square. 1/2 whole square is 1/4. This is correct answer. This is correct answer. Again you see next question. Next question is second one. Ben is 3 times as old as Samantha, who is 2 years older than half of Michael's age. If Michael is 12, how old is Ben? क्वेश्चन है कि बेन जो है वो समानता की एज का 3 टाइम्स है, 3 गुना है। और जो समानता क्या है, समानता माइकल्स की एज के हाफ से 2 इयर्स ज्यादा है। इफ माइकल इज 12 देन फाइंड द एज ऑफ बेन। तो एज का बेन पता करना है कि बताओ बेन की एज क्या है। तो सबसे पहला काम है समानता की एज क्या है, माइकल्स की एज के हाफ से 2 ज्यादा। तो माइकल का 12 है तो 12 का हाफ क्या हो जाएगा 6, 6 से 2 ज्यादा 8, और 8 किसका आ गया समानता का। और बेन क्या है 3 टाइम्स ऑफ समानता। तो डायरेक्ट आपका जवाब हो जाएगा 3 into 8 that is 24। तो दिस 24 इज करेक्ट आंसर। तो 24 आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन क्या, ध्यान, दिस इज थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन हमें कह रहा है कि डेट इज the expression x square minus 8x plus 12 is equal to 0 when x equal to 2 and when x equal to, that means we have to find the value of x for which this expression should equal to 0, right? One value is 2, that means we have to find a square root of this. One square root is 2 and we have to find other square root। तो other square root आपको फाइंड करना है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आपके पास काफी तरीके हैं। एक तरीका ये कि एक रूट्स आपको दिया गया है, दूसरा रूट फाइंड करना है। तो आप जानते हो कि अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ रूट्स क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा इज व्हाट, माइनस बी बाई। So here one root is 2, so you can write 2 plus other root, that is you can say other root, that is x2, and this equal to what, minus b by b is what, minus 8, so you will get 8, that is 8। और a क्या है आपका 1, x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 is called a, coefficient of x is called b, and coefficient or c is called constant term. So minus b by a, that is 8 upon में 1. So you will get what, x2 equal to 8 minus 2, that is 6. 6 is correct answer. So answer E option is right. Again next question, fourth question is what, Mira ran 0.60 kilometer on Saturday, 0.7 kilometer on Sunday, and 1.4 kilometer Monday. How many kilometer did she run in total? क्वेश्चन कह रहा है कि मिया 0.60 किलोमीटर रन करता है सैटरडे को, ये 0.75 किलोमीटर संडे को, और 1.5 किलोमीटर मंडे को। आपको बताना है कि हाउ मेनी किलोमीटर से रन इन टोटल, टोटल वो कितना रन करता है। तो ऐसे क्वेश्चन के स्मार्ट तरीका क्या है, इसको ऐड करना, 0.60 again 0.75, this is 1.4, so you can write 1.4, so this is 0. Now you add 5, 7, 4, 11, 6, 17 and 1, 1, 2, 2.75 kilometer. But our answer is in the form of mixed form, so you can write this 2 and 75 by 100. You can cancel out by 25, 25 3 ja and 25 4 ja. You will get 2 and 3 by 4. So your answer is 2 and 3 by 4. हमारा आंसर क्या आ गया, डी ऑप्शन। इसने आपको ऐड किया, ऐड करने से 2.75 आया, तो 2.75 किलोमीटर राइट आंसर है।
बट आपके ऑप्शन में दिस इन द मिक्स फॉर्म में है। इसको मिक्स फॉर्म में लाने के लिए 2.75 कैन बी रिटन 2 and 75 by 100। तो 25 से काट दो, 25 3 जा 25 4 जा, यू विल गेट 2 and 3 by 4। दिस इज करेक्ट आंसर। ओके, तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ध्यान दो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 5। ये 5th क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ये ज्योमेट्री से लिया गया है इस क्वेश्चन को। ध्यान, ऐसे क्वेश्चंस के लिए आप देखोगे कि this is the question in the diagram above, line AB is parallel to CD। This is the AB line and this is the CD line। AB and CD both line are parallel and EF is perpendicular to the line CD। This is the EF line and this is perpendicular to the line CD, because you can say EF is perpendicular to line CD, so this angle M is 90 degree। Now what is the measure of angle X? We have to find this angle। Okay, you can write 140, this is 140, so this angle should be what? 140 plus 40 is 180, so you can write this 40। Now if this is 40, this is 40। Okay, now you see if this is the perpendicular, you say here AB is parallel to CD and line EF is perpendicular to CD, यानी कि AB CD की पैरेलल है। अगर ये एंगल आपका 40 आ गया तो ये एंगल क्या होगा? ये एंगल भी हमारा क्या होगा? 40, डेट इज कॉल्ड ऑल्टरनेट एंगल। तो ये एंगल भी हमारा क्या आ जाएगा? 40 डिग्री, राइट। एंड दिस इज 90, दिस इज 90 एंड दिस इज 40। तो 90 प्लस 40 इज व्हाट? 130। तो 130, you know angle of sum is 180, so 90 plus 40 is 130, so this is answer is 50 degree। so right answer is what? 50 degree। okay, again repeat, AB parallel to CD, right, and this EF is perpendicular to CD, so this angle is 90। and now this is 140, so this angle and this angle is a linear pair, so sum should be 180, so 140 plus 40, so this angle is 40। now this angle and this angle is alternate angle, so this is 40 and this will 40, so 90 plus 40 is 130, so this angle will be 50। तो ये एंगल हमारा क्या होगा? 50 डिग्री। ये 140 है, तो ये बना रहा लीनियर पेयर, रैखिक युग्म। तो 140 में 40 ऐड करेंगे तो 1, ये 40 आ गया। अब ये होता है एकांतर कोण यानी ऑल्टरनेट एंगल, ये 40 आ गया। ये राइट एंगल है यानी कि समकोण है 90, तो 90 प्लस 40 क्या आता है? 130। so you will get angle X equal to 50, so right answer is C। so this is a 5th question। just see the next question। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 क्या है हमारा? ध्यान, ये क्वेश्चन है एरिया ऑफ सर्कल ए 6.25 पाई मीटर स्क्वायर, पाई इन स्क्वायर, and if the radius of circle is double, then what is the new area of circle? you know area of circle A is this, so area of circle A equal to हमारा होता है पाई r स्क्वायर। this pi r square equal to what? This is 6.25। okay, 6.25 pi in a square। okay, so if the new area, that is a dash, when the radius is double, then pi into radius become 2r, you will get 2 2 ja 4 pi r square। that means 4 into this value is what? 6.25। so this is 6.25, 4 5s are 20, 4 2s are 8, 2 10, 4 6s are 24, 25, this is 25। so our answer is 25 in a square, this is the correct answer। see the next question। David draws a line that is 13 units long, if minus 41 is one end point of the line, which of the following could be other end point? okay, so you know the distance formula, suppose this is the point, suppose this is the one point and this is the other point, so our formula, this coordinate, this is the one point, this is the second point, this is A and this is B, so our formula is AB equal to what? This is x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square root, this is the distance formula A। so one end point is minus 41, we have to find other end point, and when the length of line is 30, so this is the easy question, you can solve this from the option।
When you use the option A, अगर A option का आप use करते हो तो you see the distance formula. This is 1 and -4. So you will get 1 plus 4. 1 minus minus plus 1 plus 4 square. Plus 13 minus 1. That means 12 square. Okay. And this is what? 4 plus 1, 5, 25. And 12 square, 144. You will get 169. This is 13. So this is 13. So our right answer is A. A is correct answer. Just come to the next question. अगले क्वेश्चन पे आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान. दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है. ये आपको दिया गया है शर्ट्स एंड पावर से रिलेटेड क्वेश्चन है. क्वेश्चन आपका है कि दिस इज ए स्क्वायर अपॉन b to the power 3 multiply a to the power -2 upon b to the power -2. You know a and a -2, that is base is same. So when base is same, then in multiply just add the power. So this is a to the power 2 plus -2, and here also b to the power 3 plus -3. You will get 2 minus 2 0. So a to the power 0 and b to the power 0. So this is 1 by 1. So our right answer is 1. So answer B is correct. Yes, you see the next question. चलो next question देखते हैं. अगले क्वेश्चन में आप देखोगे क्वेश्चन 9. ये क्वेश्चन हमारा है 9th क्वेश्चन. In triangle ABC in the figure above is an equilateral triangle. ABC is equilateral triangle and D is the right angle, and D is right angle. That means this is 90 degree. This is 90 degree. Find the value of it. This is the equilateral triangle. So each angle is 60 degree. So this is also 60 degree. And now you see this is also 60 degree vertically opposite angle. So this will be 60 degree. Now we have to find value of it. हमें क्या करना है? X की वैल्यू निकालना. तो आप जानते हो किसी भी राइट ट्रायंगल में अगर दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस, दिस इज हाइपोटेन्यूज, ये लंब है, ये आधार है, ये कर्ण है. परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेन्यूज. व्हेन बेस इज गिवन and angle is given and we have to find hypotenuse. So use cos theta. You know cos theta equal to b by base by hypotenuse. Here theta is 60 degree. So cos 60 degree equal to b, that is base is 12 and hypotenuse is x. Cos 60 degree is half. So this is 12 by x. Now cross multiply, you will get 12 to the 24. So right answer is E option, that is 24 is करेक्ट आंसर. कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो तो आप इसी तरीके से ऐसे क्वेश्चन को बना सकते हो. ये बोला है एबीसी क्या है? एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है. इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब है ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों साइड सेम हो और ईच एंगल क्या हो? 60 डिग्री हो. ये एंगल क्या आ गया? 60. अब कह रहा है डी राइट एंगल है. तो डी राइट एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री. तो दिस इज 60, दिस इज 90. इट इज ए राइट ट्रायंगल. ये क्या बन गया? एक समकोण त्रिभुज बन गया. तो राइट ट्रायंगल में दिस इज द बेस, दिस इज परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस है. तो अगर बेस मालूम हो, हाइपोटेनियस निकालना हो और एंगल दिया हो तो यूज cos थीटा इक्वल टू b by h, cos 60 इक्वल टू 12 by x. नाउ आंसर इज x इक्वल टू 24. दिस इज करेक्ट आंसर. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन 10. ये क्वेश्चन हमारा काफी अच्छा और ट्रिकी क्वेश्चन है. क्वेश्चन कह रहा है इफ 10% ऑफ x इक्वल टू 25% ऑफ y एंड y इज गिवन 16, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ इट. 10% मतलब 10 अपॉन 100. ऑफ मतलब मल्टीप्लाई x. तो 10 by 100 इक्वल, दैट इज इक्वल 25%, 25 by 100 into y. y is what? 16. So just use 16. Okay. Now you see what is x? So x equal to 25 4 ja and 4 4 ja 16, and this 0 cancel out. So x equal to what? 4 into 10, that is 40. So our answer is 40. ये हमारा आंसर क्या आ गया? 40 था. तो ये था आज हमने सेट के क्वेश्चंस किए. सेट के क्वेश्चन इसी तरह के सेट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये 10 क्वेश्चन हमने सेट के
क्वेश्चन लिए हैं जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट। इस तरह के क्वेश्चन आपको एसएससी के अंदर, पीबीए एंट्रेंस के अंदर, क्लैट के अंदर भी पूछे जा सकते हैं और ये काफी अच्छे क्वेश्चन। अगर आपको ये अच्छी तरह से समझ में आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल ग्यास क्लासेस फॉर मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप चाहते हैं ऑनलाइन पेड क्लास लेना तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और वेरी मिनिमम फीस में आप हमसे डायरेक्ट 1-to-1 जूम ऐप पे क्लास भी ले सकते हैं। थैंक यू।